Hello friends, welcome to the special edition of Charts पे चर्चा। मैं हूँ विजय सिन्हा। आज आनंद फैमिली मैटर्स में कुछ बिजी है, so I'll be doing the discussion. To begin with, first of all, wish you all a happy Republic Day. आज हमारे देश का गणतंत्र दिवस है। It is a very important day because today is the day that the Constitution started assuring us of our fundamental rights. And we should never take those fundamental rights lightly, because without fundamental rights and the Constitution, there is no real freedom. ये स्पेशल एडिशन इसलिए लाया हूँ क्योंकि मैंने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स नोटिस किए थे। हिस्टोरिक डेटा निफ्टी इंडेक्स देख रहा था मैं पिछले 20 साल का ऑलमोस्ट। So there is something very interesting that I noticed, which is relevant to the months of January and February. So I thought I should share this with you immediately because this can help us create our own trading strategies for the coming month of February. So here we go. ये है निफ्टी स्पॉट का monthly chart. So each candle is a month and it dates all the way back to year 2000. जैसे मैंने शायद लास्ट चर्चा में बताया था कि more or less every year there is at least a medium term top, if not a long term top, that happens in the first quarter of the year. So Jan, Feb, March, these are the months where it happens. एक और important चीज है जो February में होता है, that is the budget. I think until the year 2014 or so, the budget used to be presented on the last day of February. Either the 28th of February or the 29th of February in a leap year. But lately, I think जब से मोदी सरकार आई है, the budget is generally presented at the end of January. Nevertheless, I noticed something important. It's a very recurring theme जो February महीने में होता है. So if you look at this chart, I have marked these yellow arrows. These indicate the months of Jan and Feb of each year, starting from the year 2002. उससे पहले के 2 साल मैंने इसलिए नहीं लिए क्योंकि उन दोनों साल का मूविंग एवरेज मेरे पास नहीं है, 20 month moving average. And as I share the data going forward, आप realize करोगे why this 20-month moving average is very important, right? So starting from 2002 all the way to 2020, and we are here 2021. To make it easy for everyone, मैंने एक Excel sheet बनाया है, so I'll switch to that. Please bear with me. So जैसे मैंने कहा था 2002 से लेके 2020 तक का डेटा है. जो कॉलम्स मैंने बनाया है, जनवरी मंथ का हाई, उसके बाद फरवरी मंथ का लो, एंड अगर फॉल हुआ तो फॉल या राइज हुआ तो राइज. And as you can see, in all the 18 years, it was a fall. There was never a rise on a monthly basis. Monthly closing अगर लिया जाए, percentage of fall. And जनवरी के महीने में 20-month simple moving average कहाँ पर था हर साल का, 2002 में कहाँ था, 2003 में कहाँ था, so on and so forth. And जनवरी में जो निफ्टी स्पॉट का लेवल था वो 20 DMA से कितना दूर था.
deviation कितना था. And you will notice that in year 2002, 2009 and 2016, only in these 3 years was the Nifty spot actually below the 20-month moving average. Only thrice in 18 years. Baki 15 saal, Nifty spot in January, at the end of January month, has been above the 20-month moving average. I think from the lowest deviation of 4% to the highest deviation of 40%. इसका मतलब ये है कि 2019 में निफ्टी स्पॉट 20-month मूविंग एवरेज से 4% ऊपर क्लोज हुआ था जनवरी के महीने में. 2004 में 40% ऊपर बंद हुआ था जनवरी के महीने में. So this, again proves that when we look at historical data, we will see some repetitive trends. Ultimately, stock market is nothing but a collective reflection of human greed and fear. And there is some natural cycle, I think. Even stock analysis theories like Elliott wave are based on natural phenomena. The phenomena that you notice in the universe. And human behavior cannot be an exception. कुछ तो होता है जनवरी और फरवरी महीने में कि लगातार 18 साल मार्केट करेक्ट करती है उसके बाद. Will it again happen this year? Maybe not. But we should not ignore what past data is showing us. So, what if the question that might come in your mind is, अच्छा ये देख के तो लग रहा है कि आंख बंद करो और शॉर्ट कर दो. अगर हम वो करते हैं अभी, tomorrow when market opens, suppose we go short, what's the risk? Of course, the stop loss will be the high of the last day, or if anyone is really brave, high of the month of January. क्या वो हाई कट सकता है? It happened sometimes, once, twice, thrice, fourth, fifth, sixth. पिछले 18 सालों में 6 बार ऐसा हुआ है कि फरवरी में निफ्टी स्पॉट ने एक नया हाई बनाया है. मैंने ये एनालाइज नहीं किया है कि वो नया हाई मंथ एंड में बना या मंथ के स्टार्टिंग में ही बना है या कब बना है. We can go into that detail. I mean, I will leave that homework to you guys. I think it's a good homework to do. But if you look at the risk on a monthly level, January high से February high इस साल में सिर्फ 84 points और ऊपर गया था. So if you were shorting, say, one single lot of Nifty, you're risking about 84 points, which I think is all right. I mean, if you're taking a positional futures trade on the index, 100 point का stop loss तो बनता है. I know there are a lot of people who trade with 20 points, 40 points. But I think when it comes to large moves, थोड़ा सा tolerance ज़्यादा रख सकते हैं. So if you notice here, barring these 2 years, which is 2012 and 2017, जहाँ पे फरवरी के महीने में निफ्टी ने काफी ऊपर नया हाई भी बनाया था, यहाँ 400 पॉइंट और यहाँ 300 पॉइंट. Obviously, if you were short, you would not stay in the trade for so long. You will probably exit at a 100-point stop loss. But गौर करने वाली बात यह है कि 18 सालों में सिर्फ ऐसे 6 बार ही हुआ है कि निफ्टी ने फरवरी में जनवरी के मुकाबले एक नया हाई बनाया है. उन 6 बारों में भी 4 times you could have avoided the stop loss from being triggered. So that again
tells you that maybe the same thing will be repeated this February. अच्छा, हम एक काम करते हैं, एक छोटा एक्सरसाइज और करते हैं. Let's sort this data. Right, we go to sort and let's sort the data by deviation from the 20-month moving average. Right. यहां हम देखते हैं कि 2004 में सबसे ज्यादा डिविएशन था निफ्टी का, 40%. Nifty spot was 40% above the monthly moving average of January. 32% here, right? Mostly double digits में ही था. How does it correspond to the fall that happened? जहां जिस साल में 40% डिविएशन था, 13% का फॉल आया था. जिस साल में 32% का डिविएशन था, 24% का फॉल आया. यहाँ पे जहां 15% का डिविएशन था, वहां 16% का फॉल आया है. Right. So no matter what, the minimum fall that has happened is 1%. But if you see, there are a lot of double-digit falls. 13%, 24%, 12, 16, 10, 15%. So ये हमें बता रहा है कि काफी decent correction आता है February महीने में, and sometimes it is even extended into the months of March. For example, अगर हम 2020 में जाएं, जो कोरोना से पहले जो fall हुआ था, that was massive, right? I mean, so the fall continued, and I'm sure there are other years जहाँ पे March में भी fall continue किया होगा, but for us, for our trading purpose, we should only look at the upcoming month. March is a month later, so we could look at it later. So we'll come back to the current situation. 2021 January high was 14,754. February month low we will know very soon, right? The 20-month moving average was at 11,478. The Nifty is 3,276 points above the 20 DMA, 22% away. Right, and if you look at the historic corrections, यहाँ पे 2015 में भी 22% की दूरी पर था, 6% का करेक्शन हुआ है, right? And यहाँ पे 24% की दूरी पर था डिविएशन और 12% का करेक्शन हुआ है. यहाँ पे 25% की दूरी पर था और 12% का फॉल हुआ है. So I think it is fair to expect, even a correction of 10 to 12%. Now let's go back to the Nifty chart. So अभी तक जनवरी में क्या एक्शन था? After making a high of 14,754 round figure, currently we have closed at 14,238. Right. So 300-400 पॉइंट का करेक्शन तो ऑलरेडी हो गया है, right? It's 14,754 minus 14,238. 500 पॉइंट का करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, और ये 516 पॉइंट जो है ये बनते हैं 14,754 में 3.5%. सो इसी महीने में ऑलरेडी 3.5% हम नीचे आ गए हैं. February में क्या होगा? It will be very, very interesting to watch. If we come down to the daily scale, it is important to remember that we can count
5 waves up completed, 1 2 3 4 5. So ये बहुत important है. And even if we assume Elliott wave count, this is 1 2 and again third wave के अंदर का ये 1 और 2 है, तब भी थर्ड ऑफ थर्ड खत्म हो गया है. सो फोर्थ वेव का करेक्शन जारी है अभी, राइट. देन लेट्स लुक एट द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ निफ्टी. मतलब निफ्टी को मूव कौन करेगा? आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू know this, but it helps to look at it, right? निफ्टी 50 के बिगेस्ट कंपोनेंट्स हैं रिलायंस, ऑलमोस्ट 11% का वेटेज है. उसके बाद HDFC बैंक जिसका भी 10% से ऊपर का वेटेज है. सिर्फ ये दो स्टॉक्स 21-22% का वेटेज रखते हैं निफ्टी में. और हमने लास्ट चर्चा में रिलायंस डिस्कस किया था, आपको याद होगा. लेट्स गो बैक टू द रिलायंस चार्ट. सो लास्ट चर्चा में मैंने बोला था कि 1 2 3 4 5 waves डाउन. सो दिस इज ए. कंफ्यूजन था कि ये पूरा बी का ट्रायंगल तो नहीं है. अगर इसी ब्लू लाइन के अंदर ही प्राइस एक्शन होता तो we could have marked this whole thing as a triangle B with the top here, but ऐसा नहीं हुआ है. Last week it started moving up. That is when I thought कि maybe 1 2 3 ये फोर्थ के बाद शायद फिफ्थ आएगा करके. But maybe I should have seen the internal wave count. Let's look at hourly. So it clearly shows 1 2 3 फोर्थ यहीं पे लग गई थी एंड ये फाइनल फिफ्थ में था उससे, एंड वहां से करेक्शन शुरू हो गया है. So it clearly shows that wave A and wave B are over, and what is unfolding is wave C. And these are simple Fibonacci extensions. अगर wave A के समान wave C होगा तो ये 1580 तो आएगा. And वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से हम देखें, लेट्स मूव टू द वीकली चार्ट. Right, these were the highest volumes. 2040, that was a huge resistance. उसके ऊपर जा नहीं पाया. It tried here and managed it within the week, but it again came down. तो अभी ये 40 वीक मूविंग एवरेज और 20 वीक मूविंग एवरेज के बीच में फंसा हुआ है. It has to give way. So इससे पहले के हाई वॉल्यूम्स अगर देखें यहाँ पर है. ये बाकी सब तो these high volume zones are all above this yellow line. So since the price is below the yellow line, we need to look at the next big support, which is here. इस कैंडल का हाई है 1495. So 1495 is the next big support for Reliance. अब आप ये सोचिए कि 1900 रुपए का शेयर अगर 1500 तक गिरता है, even assuming that HDFC Bank stays stable and the other stocks are doing okay, this itself can be a dragging factor on the index. And the Fibonacci projection of C wave equality to A is 1580, which is just 100 rupees away from this high volume zone. So this chart again compels me to think that the correction that's going to unfold in February will be substantial. So let's keep this in mind and trade accordingly. Any bounces, pre-budget or post-budget on the index, we should definitely look at, buying puts or going short on Nifty futures, unless and until this high is taken out, which is 14,754. In fact, कल निफ्टी ने 20-day moving average के नीचे भी closing दिया है. So the next support really is the 40-day moving average, which is at 13,880.
approximately. Bank Nifty also closed below 20-day moving average. It is taking support at the 40-day moving average, which is at 31,040 approximately. So Bank Nifty भी कोई ऐसे confidence inspiring structure नहीं दिखा रहा है. So we need to watch how it behaves from here. अगर ये 40-day moving average break नहीं करता है, then maybe banks have some way to go. But keeping what Reliance is showing us, once it breaks this level 1835, that is like 200% confirmation कि ये 200-300 रुपए और नीचे जाने वाला है. So this is what I wanted to share with everyone. Please study the data on your own. It's a good exercise to go through past data. Wish you all happy trading for the coming week and for the coming month. Hope this episode has been useful. See you on the other side.